So let's start. This is our next lecture, Newton's laws of motion. So अभी तक हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था. काइनेमेटिक्स इज जस्ट द स्टडी ऑफ मोशन. सो काइनेमेटिक्स जो था वो था जस्ट द इफेक्ट ऑफ आर फोर्सेस. सो there is some cause happen, and because of that some effect happen. So we have studied the concept of causality in Y physics lecture. So if you haven't seen it, just go visit that. सो कॉजलिटी होता है कि कॉज होगा तभी इफेक्ट आएगा. तो अभी तक हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में वी आर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ मोशन. इफेक्ट ऑफ मोशन सबसे पहले क्यों पढ़ा हमने? क्योंकि हमारे को वी सी द थिंग्स विच आर विजिबल टू अस फर्स्ट टाइम. ठीक है, हम वी डोंट गो इनसाइड द थिंग. सपोज दिस इज एन आउटसाइड थिंग विच इज़ विजिबल टू यू, सो यू विल जस्ट सी द आउटसाइड थिंग फर्स्ट. सो उसका पूरा एनालिसिस करेंगे. व्हेन यू स्टडी द होल आउटसाइड थिंग देन यू गो इनसाइड, then you further go inside, then you further go inside. So when you study that further go inside thing, उसके बाद फिर आप और अंदर जाते हैं उसके, और further why में जाते हैं कि वो क्यों हो रही है, वो क्यों हो रही है. ठीक है, so you keep on asking why. So first thing which has been observed to you is the effect, that is the motion which is happening. So suppose a car is moving in front of you, तो first instance जो first intuition आपके दिमाग में आएगा, that is how fast the car is moving, where it is going, how fast this car is moving with this another car. If it's go with this speed, how long it will take to reach to certain destination. So these are the set of questions which is going to come to your mind when you're going to observe something which is moving. So सबसे पहले जो चेंज होता है वो ऑब्जर्व होता है, उस चेंज को स्टडी करते हैं. देन हम जानते हैं कि उसके रीज़न क्या है, उसके चेंज होने का रीज़न क्या है, द बिहाइंड दैट व्हाट इज़ हैपनिंग. ठीक है, सो इट इज़ लाइक going first you study the peripheral things, then you keep on moving towards the center. ठीक है, so अभी हमने जो till last lecture in the kinematics पढ़ा, हमने पढ़ा we've studied the effect of motion, जिसमें हमने parameters देखे थे of the motion के, और we have seen some applications of motions, and we have seen the relative motions and all those things we have seen, but it is all about the effect that we have studied. But from now onwards we are going to study the cause of motion, के जो आपको इफेक्ट दिख रहा है उसके पीछे कॉज क्या है, what is the reason behind that. So we are going to study the cause in this chapter. Okay, so this is what we are going to study in the Newton's laws of motion. So Newton's laws is nothing but the mathematical framework of the cause which creates an effect. ठीक है, so we are going to study the mathematical framework which is not been developed in a year. It is a long legacy which has been developed over thousands of years, and the Newton unified all those things into a proper mathematical with a reasoning framework. So he has given his 3 laws. That is what we are going to study in the coming lecture. Okay, coming chapter. So we'll start with the cause of motion. Earlier chapter was the effect of motion. So our lecture number 1 is there today. So the scope of lecture number 1 is we are going to see the introduction of Newton's laws of motion. Okay, in that we are going to see what is a natural state. Okay, so we'll see what was the during the time of Aristotle, उस time पे what was the natural state, then what happened during the time of Galileo, and how Galileo helped Newton to work on the framework of Newton's laws, to work on the framework of laws of motion. ठीक है, so Newton has because already a lot of work has been done by Copernicus and Galileo, but that was all the experimental work, and it has never been put in a theoretical manner or in the mathematical framework. Newton just take all of them, unified them, and put them in the mathematical manner, so it can be applied anywhere in the future in any situations. ठीक है, so that we are going to study. And Newton's laws of motion are it is also having certain limitations, so it can be applied, but to almost you can say 95 to 96% of the situations, 4 to 5% of the situation where we have to apply, where the Newton's laws of motions are not valid, where the object is having a speed more than a light, because we call it a Newtonian mechanics whenever we are studying the mechanics which follows the Newton laws of motion. So that is like a general case, that is like in 95 to 96% of the cases you will deal with this only 4 to 5% of the cases where you study the object where the it is more than a speed of light, then only you have to go to the special theory of relativity. ठीक है, same way अगर आपको ऑब्जेक्ट स्टडी करना है, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट वी आर स्टडिंग इज
that is visible to us, that is visible to our naked eye. But if you go and study at the atomic level, then you have to go to the quantum mechanics. There the Newton's laws of motion will not work. Okay, so but for our chapter scope we are going to study only the Newton's laws of motion. ठीक है, फिर हम देखेंगे forces, and forces को we are going to study the classification of forces on the basis of interaction in this chapter. Okay, but if you wanted to know the deep into the forces, you go and see the Y physics lecture number 2, where we have studied in detail the fundamental forces of nature and how those forces interact, how those forces work, and what is the theory of everything, how the quest is going on for the unification of these forces, that we have covered up in our lecture Y physics. Then we are going to study the Newton. Then we go more precisely into the Newton's laws of motion, where we are going to study today the first law of motion, which gives us the term inertia. What is inertia? We are going to study what is the Newton's first law of motion that we are going to study. Then we are going to study the Newton's second law of motion. Second law of motion is a very solid framework that is creating a direct effect with direct relation between cause and effect. That we are going to study Newton's laws of motion. In that we are going to study two important topics. It is momentum and the impulse. Okay, so this is the scope of our lecture number 1 today. Okay, so let us start. Let's start. So अभी तक हम लोगों ने एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी पे we have seen the change in the bodies only, ठीक है, we have seen this effects only, or the change in the body. We haven't seen the what caused this body, this motion, and what is the interaction of this body with any other body, and what is the interaction of this body with the external environment. ठीक है, we haven't studied that. This is the scope of our lecture. So यहाँ से यहाँ तक, this is now we are going to study in the coming chapters or in the coming lectures. What is the cause of my if this body is moving, if some changes is happening in the body, so what is the cause of that change, what is that push and the pull which is creating a change in the body. Then we are going to study how this body is interacting with some other bodies. So this body is not like, if body is isolated, we'll study the isolated body. Then we are going to study how this body is been interrelated with other body, how this body is interacted with another body. Then we are going to study how this body is interacted with its environment, with its surroundings. Okay, so this all things we are going to study in today's lecture. But in the last lecture we have studied only this effects. The body है वो move कर रही है, उसमें change in motion हो रहा है. We have studied that thing only we have studied the motion in the last kinematics chapter. Okay, so our scope is we are going to study this side now. So what do you think is the natural state? So there has been a continuous thousands of years of questioning which has been going on. Okay, what is the natural state? Is it natural state of a body's motion, or the natural state of the body is rest? So there was a huge question going on in last 2000 years, or more than 2000 years. So it was first said by the Aristotle. So he was the first Greek philosopher who has given us the physics on the basis of logic and reasoning. So but his framework, whatever he has given it, most of it's not right, but we can say it is on the basis of logic, and it was like 2000 more than 2000 years back. So at that time, coming something with a logic is much more important than coming something as like myth or superstition. So this person Aristotle has given something with the logic. ठीक है, so what he has given, Aristotle ने बोला कि नेचुरल स्टेट जो होती है दैट इज़ अ रेस्ट. ठीक है, एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, सो इट विल कम, इफ इट्स मूविंग, द पार्टिकल इज मूविंग विद समथिंग, सो इट विल, नेचुरल स्टेट इज टू कम टू द रेस्ट. सो दैट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. देन ही सेड कि अगर किसी पार्टिकल को मेरे को कांस्टेंट मूव कराना है, इसको कांस्टेंट मूव कराना है, सो आई नीड अ कांस्टेंट फोर्स. ठीक है, ही सेड आई नीड अ कांस्टेंट फोर्स. इसको कंटिन्यूस पुश देना पड़ेगा, तभी ये बॉडी मूव करेगी. ठीक है, तभी ये बॉडी मूव करेगी. Then he said कि there are two set of motion. One is natural motion and another one is thunderous motion or violent motion. So natural motion क्या होता है मेरा, कि ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिर रहा है, naturally it is falling it down. So he said it is a natural motion. Another one is if a block is there, if you push this block and it started moving, so it started moving with some velocity, we can say this is my violent motion. So if you applied something and the body started moving, then we call a violent motion. If it's moving naturally like falling object from a height, we call it a
natural motion. He said it natural motion. Then he also concluded that if heavy things fall faster than the lighter things, that means if you throw a heavy ball from a height, it will come in a shorter time, and the speed at this point, at the bottommost point, is more for the heavier objects than for the lighter objects. So this is what he has concluded, but this was all on the basis of logic, no experiment. But this has been followed for 2000 years, up until the Galileo, up until 1564. The Galileo came, the rebel and the revolutionary astronomer came, and he changed around the whole thinking. So he not only changed around this thinking, he also changed around which was considered as a truth, as the geocentric model of universe के earth is at the center, and the sun, the other planets, and everything is revolving around the earth. So because of this also, he have got a conflict, he have got a issues with the theologist of that time period. So but this person has never bowed down, and he has always taken a side of science, and because of him only we have got the Newton's laws of motion, because he has set up framework, and he during that time period he has that was a time period where everything was on the basis of theology, everything was on the basis of religion, but he came up with the experiments, he came up with the logic, he came up with the scientific attitude, and set across a whole wave where new physicists can come across and work on this. So he paved a path for the Newton. Okay. So in till 1564, this was the state के नेचुरल स्टेट रेस्ट की है, कांस्टेंट मोशन के लिए फोर्स चाहिए, नेचुरल मोशन ये होता है, और हैवी ऑब्जेक्ट्स हमारे फॉल फास्ट करते हैं. दिस वाज द थिंग्स विच वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड. बट Galileo in 1564, he has done certain experiment and challenge whatever was the standing legacy during that time period. Okay, so first of all, he has challenged the geocentric model, and because he has developed a telescope, and through the telescope he could able to see, and came up with the ideas that earth is not the center, but we are revolving around the sun, so we are in the heliocentric universe, not in the heliocentric universe, not in the geocentric. So that was totally in conflict with the church, and he has to give a forced apology to the church for this thing, but he never accepted that. So even in the motion, apart from the astronomy, even in the motion, he has done a lot of experiments which proved Aristotle wrong, which proved the legacy of 2000 years wrong. So he has done inclined plane experiments. So that gives the birth of inertia. So what is the inclined plane experiment? So inclined plane experiment he has done. Okay, suppose he has thrown a ball from here. So he has dropped a ball from here. If we keep the inclined plane of the same height, so of the same slope का रखा उसने, यहाँ से बॉल फेंका, it will go up to the same height. ठीक है. अब इसने क्या किया, उसने सेकेंड उसमें स्लोप कम कर दिया. नाउ दिस इज माई स्लोप. सो अगेन द बॉल हैज गॉन अप टू हियर एंड गॉन अप टू द सेम हाइट CD. ठीक है, सेम हाइट पे गई. सो सेम हाइट पे गई, दैट मीन्स ही हैज ट्रैवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस. देन अगेन इन द थर्ड वन ही फर्दर slope down. ठीक है, और फर्दर स्लोप डाउन कर दिया. देन अगेन दिस बॉल हैज कम अप एंड गॉन अप टू द सेम हाइट, इट हैड ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस. देन ही थॉट के how about if I make the slope totally zero, that means the ball will keep on continuing for the t infinite, and it will never reach at this point. So he concluded that rest is not the natural state, motion can also be set as a natural state. Okay, so that set across the whole change in the understanding. Okay, this experiment okay, the body is moving, so it will keep on moving until some external push is going to come, that is going to change that motion. So here this external push is coming on, we are reducing this external push. आप slope कम कर रहे हैं, that means you are reducing this external push. और एक time पे आके you just make the slope flat, you just make it flat, and the ball keep on rolling, t is equal to infinity, keep on rolling. It is not going to get stopped because it is never going to achieve this height. ये height कभी achieve नहीं होगी, so it is keep on moving. So on that basis he said कि this is also led to the birth of inertia, कि अगर कोई बॉडी है, अगर वो मूव कर रही है, वो अपने आप
मोशन को चेंज नहीं कर पाएगी. सम एक्सटर्नल फोर्स और सम एक्सटर्नल पुश इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन. सो ऑब्जेक्ट टेंड टू मेंटेन द मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स चेंज इट. ठीक है, बॉडी के पास अपनी कोई टेंडेंसी नहीं होती कि वो अपने आप को चेंज कर सके. ठीक है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही पड़ी रहेगी. ठीक है, अगर वो मोशन में है, अगर इफ द बॉडी इज मूविंग सो इट विल कीप ऑन मूविंग. सिर्फ अपने आप बॉडी में कोई ऐसी टेंडेंसी नहीं है कि वो अपने आप को रोक ले. ठीक है, सम एक्सटर्नल पुश शुड बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट और विद सम अदर ऑब्जेक्ट इट शुड बी रिक्वायर्ड सो दैट इट विल स्टॉप. सो दैट इज व्हाट लेड टू द बर्थ ऑफ इनर्शिया. So inclined plane experiment led to the birth of inertia. Then he said that rest and motion both are the natural state. If a body is at rest, it will keep on rest until some external push is there, and if a body is in motion, it will keep on motion until some external push is required to stop it. So that he has proved it through the inclined plane experiment. Okay. Then he said that force changes the motion and it does not require a constant. It does not require constantly. So here we have seen the ball will keep on moving without any force required. Okay, so we have seen it in the experiment. The ball dropped down, and here only up to this point some force of gravity is working, and after that it will keep on moving. There is no external push required so to keep the मोशन कंटिन्यूस. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला था कि अगर मोशन को कंटिन्यूस रखना है आपको कांस्टेंट फोर्स लगानी पड़ेगी. बट गैलीलियो ने उसको चैलेंज किया. उन्होंने बोला कि फोर्स चेंजेस द मोशन. एक टाइम अप्लाई कर दिया कि अगर कोई बॉडी है ये इधर मूव कर रही है एंड यू जस्ट apply a force one time, it will change the motion and it will keep on moving in this direction if no external force is there. So he said that force just changes the motion and it should not be required constantly. So the problem during the Aristotle came is he said that constant motion required the constant force. So what will happen if you throw a projectile? So projectile के अंदर तो constant force नहीं लग रही है. ठीक है, सो ही सेड के मोशन के लिए कांस्टेंट फोर्स चाहिए. तो एक बार आपने फेंक दी बॉल को तो एक बार फोर्स लगा दी, कंटिन्यूस फोर्स तो नहीं लग रही है. सो दैट इज व्हाट कॉन्ट्राडिक्ट विद द एरिस्टोटल. सो दैट इज व्हाट द गैलीलियो सेड कि फोर्स एक बार लगा दी इट विल चेंज द मोशन एंड देन इट डज नॉट रिक्वायर टू मेक द मोशन कंटिन्यूस. ठीक है, उसको कंटिन्यूस मोशन के लिए वी डोंट रिक्वायर द फोर्स बिकॉज मोशन इज अ नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल स्टेट. देन ही सेड कि all bodies fall equally. It is not like a heavy body fall fast or lighter body fall slow, or it is not like a जब body ऊपर से नीचे गिरती है तो bottom most पे heavier body is having more speed, because we have seen also right now in our kinematics equation कि there is no terms of the mass in all our kinematic equation. It is there is mass has not been involved here. So if the air drag has been we neglect the air drag, then there is no role of mass here. ठीक है, so he said if there is no air drag or if we consider the air resistance as negligible, then all body falls equally. That means they fall at equal pace and they fall at equal time. ठीक है, so there is no differentiation on the basis of mass. That is what the Aristotle has said. So he said all those things on the basis of experiment. He has done the measurement, and all those measurement and experiment, it was never been put in a theoretical manner, and it was never been put in a framework, but it was all experimented. So the Newton, then it paved a way for the Newton came across and he unified all the things which Galileo said, and he put it in a nice framework which can be applied in all the situations. So that is what the Newton has done after that. Okay, so as soon as the Galileo has gone, Newton came up. I think the same time year the Newton born when the Galileo died, and during that time, from that time period, the whole understanding of physics got changed when the Newton gave the 3 laws of motion. Okay, so this we have seen the inclined plane experiment that Galileo has done, that gives the rise of inertia. Inertia is what? Okay, if a body के पास अपनी कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो अपने को रेस्ट से चेंज करके मोशन में ले आए और मोशन से चेंज करके रेस्ट पे ले आए. ठीक है, जो एक्सटर्नल पुश मिल रहा है बॉडी को, ऑन दैट बेसिस इट इज़ गोइंग टू चेंज. ठीक है, और वो एक्सटर्नल पुश को रेजिस्ट भी करेगा, और अगर एक्सटर्नल पुश मिल रहा है तो उसके साथ साथ जाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द इनर्शिया. Okay, so we'll go deep into the inertia when we are going to study Newton's first law of motion. That is that's where we are going to get the precise understanding of this inertia. Okay, so this is what the Galileo done. Then after that Newton's has put across a framework of this laws of motion and gave a
give altogether a Newtonian mechanics. ठीक है, so Newtonian mechanics क्या है हमारा कि how force and acceleration are related, how cause and effects are related. ठीक है, so that is what we are going to study in Newtonian mechanics, how force and acceleration are related. But it is valid when the velocity we are studying, ठीक है, motion जो हम पढ़ रहे हैं उसका जो velocity है that is lesser than the speed of light. If it's more than a speed of light, then we have to then Einstein has given a special theory of relativity, then that is applicable in all the cases. So that is what we have to apply in when the object's motion is velocity is more than the speed of light, or agar object ka scale is at the atomic structure, then the Newton laws of mechanics will not work, then we have to apply quantum mechanics there. Okay, so but in generally in most of the cases, as I've told you, the first observation is the bigger things only, and in those things in most of the cases our velocity is lesser than c, and we are not going down to the atomic level, we are seeing at a larger level. So in that case we can apply the Newtonian mechanics. Okay, so most of the cases we can apply the Newtonian mechanics. So let us now further deep down into the force. What is force? So force हमने on the basis of nature we have seen कि four fundamental forces होती हैं हमारी. So first fundamental force is gravitational force, ठीक है. Second fundamental force is electromagnetic force. Third is weak nuclear force, and the fourth is strong nuclear force. So these are the only four fundamental forces. और जो आप बाकी forces देखते हैं like friction, tension, normal force, spring force, so whatever are these forces, these are just the manifestation of just electromagnetic force. ठीक है, that we are going to see. So these are just the macroscopic manifestation of electromagnetic force. So micro level पे वो electromagnetic force ही लग रही है, but macro level पे you can say it is a friction, it is a normal force, or it is a tension. All those forces are the macroscopic manifestation of electromagnetic force. So I'll just give a brief on this, but if you wanted to learn about this in detail, go check the Y physics lecture. So this is the most fundamental force. Okay, this has been helpful in making your nucleus. Strong nuclear force is bring the protons and neutrons together, and it's going to help in making the nucleus. Without it, the nucleus will not form, nucleus will not form, atom will not form, atom will not form, nothing will form. Okay, so strong nuclear force is the force which is fundamental for the creation. ठीक है, अगर ये नहीं है तो we can the whole universe creation is impossible, because it is binding proton positive which is binding. Okay, so this is a strong nuclear force which led to the formation of nucleus. Then there's a weak nuclear force that led to the stability of nucleus. ठीक है, then there's the electromagnetic force which works and that is helpful in the creation of atoms, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस और उसके अराउंड पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड करते हैं, फॉर दैट इंट्रैक्शन जो होता है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन. सो दैट इज़ हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटम्स. एटम बनेंगे, सो एटम और एटम के बीच में फिर देन अगेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विल वर्क एंड इट विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल. सो एट दिस लेवल अप टू द न्यूक्लियस लेवल दीज टू फोर्सेज आर ओनली एक्टिंग. न्यूक्लियस के बाहर आते ही वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जहाँ पे क्या है एटम के बीच में लगेगी. ठीक है, एटम बनने में पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चाहिए, बिकॉज टू कंबाइन न्यूक्लियस विद इलेक्ट्रॉन्स वी नीड अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. फिर उसके बाद व्हेन द एटम फॉर्म देन द एटम कंबाइन, एटम प्लस एटम कंबाइन दे फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए चाहिए, देन द मॉलिक्यूल कंबाइन इट विल फॉर्म अ मैक्रो मॉलिक्यूल कंबाइन दे फॉर्म अ ऑर्गन. टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन के बाद बनेगा आपका ऑर्गन सिस्टम के बाद बनेगा आपका ह्यूमन. आपकी बॉडी बन जाती है ह्यूमन. सो अप टू दिस लेवल इट इज़ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच इज़ वर्किंग, विच इज़ मेकिंग ऑल ऑफ देम. ह्यूमन बनता है, ह्यूमन मास आता है, मास के बाद देन यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आती है Fg, बिकॉज आपके पास अब मास आ गया. व्हेन यू बिकम अ ह्यूमन देन यू आर गेनिंग अ मास, देन द gravitational effects is going to come, then the force of gravity is going to come, then your mass, the whole earth mass which is going to combine, and from here itself then the universe in the larger bodies Fg is dominating. ठीक है, then in the larger body Fg is dominating. ठीक है, so that is how first we have a strong nuclear force. ठीक है, that is fundamental for the
क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, नहीं ये नहीं होगी तो वी विल नॉट बी हैविंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होगा तो विल नॉट बी हैविंग द एटम, एटम नहीं होगा तो नथिंग विल बी देयर, ठीक है. दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल वन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. देन द वीक न्यूक्लियर फोर्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दैट एटम, for the stability of that nucleus. Then then we have a electromagnetic force which is in the larger way, it is applicable in most of the cases atom में बनाने में, molecule में. So electromagnetic force is a force which has been helpful in the atom formation, atom say molecule formation. This is nothing but the chemistry. Then from here it is nothing but the macromolecules, organ system, human, that is the study of the biology only. So electromagnetic force is then the third fundamental force, and the fourth one is on the larger bodies. Then we are having the gravitational force, ठीक है. So इनका रेशियो क्या होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स हो गई वो 10, अगर इफ आई से द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑफ 1, then force of electromagnetic is 10 to the power 36, force of weak nuclear force is 10 to the power 25, 26, and the force of strong nuclear force it will be 10 to the power 38, ठीक है, अगर ये force of gravity 1 है, ठीक है. तो that much is the smallest in force of gravity, ठीक है. Okay, so that's why if you hold a book, the earth could not able to pull that book. आपका जो hand और book के बीच में जो electromotive force है, that is so much strong that it is not letting the book falls from your hand and go towards the earth, ठीक है. So that's why the electromagnetic force is so strong that if you carry a book, the book will be in your hands only, okay. So this is on the basis of nature. On the basis of nature we have the fundamental forces, but here in this chapter we are going to study the forces on the basis of their interaction, So before that we are going to study what is force. So force is a quantitative description of interaction between object and object and environment, ठीक है. So if you apply a push on something, so how this object is suppose this wall is there, how this object is now interacting with this wall, how this object is interacting with this floor. So this is what this is what we are going to study with the force. It's a quantitative description, is the interaction between the object and object, this object and the object and the environment, ठीक है. Object and the floor, this friction is going to come up here, so it is a quantitative description, ठीक है. And it does not always change in motion. The force can always, it's not always कि force apply हो गई so it will change in the motion. So we can see it if you're sitting on a chair, there is a gravitational force working on you but you are not moving, ठीक है. So there is no change in motion in that. Second way, if you push a very heavy block, then block might not move, so whatever the push you are going to apply. So it is not always कि force will result in the change in motion, ठीक है. It is not always the force will result in a change in motion, right. Now what is force? Force is nothing but, in a general term, it is a push and pull. It is a cause behind the motion, okay. It is just general push and pull, and that push and pull, it is going to create motion or tries to produce motion. If the body is at rest, it is stopping the motion or tries to stop the motion. If the body is moving, okay, it is try to change or it is going to change or tries to change the direction if the body is moving, and it is going to change the shape of the body. If suppose this is there, if you apply force from here, it might compress this body and it will deform the body, it will change the shape of the body, okay. So there are 4 effects that the force can produce. One is it can change the motion or tries to change, it can stop or tries to stop the moving body or rest से move कराने के लिए, or it can change the direction or tries to change the direction, can change the shape of the body. So this is what the force can do. These are the effect that the force can produce, and force is nothing but is your just push and pull, it's your force, okay. It is how the bodies are interacting. Suppose you are pushing a box, that means your body and that another object, how they are interacting, it's through the force only, okay. Then that object, how it is moving in the environment, that is what a object or environment के बीच में interaction, right. So that is what our force. So now
we are going to see the classification of forces. Classification of forces हमने already last slide में देखा था कि on the basis of fundamental forces. So now for our Newton's laws of motion, most of our forces we are going to study the interaction. On the basis of interaction we are going to do the classification. One is on the basis of interaction we are having the contact forces and non-contact forces, which is called a field force. Okay, in the field force it is action at a distance. It is like two bodies interaction or the contact is not required. Okay, two bodies interaction or contact is not required if when this force is applied. Okay, so in that field forces there is, it is action, like if you see on the gravity, so earth is pulling you down but there is no interaction. Okay, so even if you go higher up the earth, so there is no interaction but still it will pull you down. Okay, so weight, like for instance Fg, gravitational force, and the electrostatic force that we are going to study once we finish this part 1 of mechanics. We are going to study that electrostatics in detail there. So these both are the field forces that does not require a contact to make it applicable. And then again we have the contact forces. Okay, contact forces जो होगी हमारी, that is all the manifestation of electromagnetic forces. ठीक है, it is no other force, it is just the electromagnetic force. जितनी भी हमारी contact forces हैं, such that नॉर्मल फोर्स हो गई हमारी, फ्रिक्शन हो गई, टेंशन हो गई, स्प्रिंग फोर्स हो गई, कोलिशन हो गई, सो ये जितने भी फोर्सेज हैं इट इज़ जस्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. ठीक है, मैक्रो लेवल पे. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मींस एटम में, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ना, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिफरेंट एटम का अगर मैं दोनों को पुश करूँगा तो दोनों के पॉजिटिव रिपेल करेंगे, सो दैट विल क्रिएट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन. सो दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट वन सेट ऑफ फोर्स. ठीक है, अगर मैं एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करूँगा, सो दैट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन इट माइट क्रिएट अ फ्रिक्शन. सो दीज आर ऑल द दिस जितनी भी हमारे को विजिबल फोर्सेस ये दिख रही हैं, दिस आर जस्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, सो कैसे हैं? सो नॉर्मल फोर्स क्या होती है ना, नॉर्मल फोर्स क्या होती है मेरी, कि इट इज़ अ पुश बैक फोर्स दैट प्रिवेंट्स द ऑब्जेक्ट टू फॉल थ्रू द अनदर. सो सपोज एक ब्लॉक है which this block is keeping on the table, so that means the block is not going into the table and the block is not going into the table. ठीक है, so the table is pushing this block up. ठीक है, otherwise that push that the block is the table is giving to the block, it is called a normal, that is a pushback. ठीक है, that prevent the object fall through each other. ठीक है, ना टेबल ब्लॉक के अंदर घुस रहा ना ब्लॉक टेबल के अंदर घुस रहा, so it is a pushback. So it is because of the atomic repulsion. This is a perpendicular force. So ये दोनों ऑब्जेक्ट है, so it is a perpendicular, इस पे नॉर्मल आ रहा होगा, because of table it is giving it a push, so it is a perpendicular force. Okay, it is a perpendicular force, and this is because of the atomic repulsion. ठीक है, so suppose here जो इसके एटम्स होंगे और जो ब्लॉक के एटम्स होंगे, सो दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो रहा होगा, दोनों के न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, दैट्स वाई दिस इज कमिंग इन. ठीक है, देन सेकंड इज माय फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड द इंटरलॉकिंग ऑफ द माइक्रोस्कोपिक सरफेस एज पर इट इज. सो यू नो इफ़ यू गो ऑन ए माइक्रो लेवल, तो सरफेस पे अगर एक ब्लॉक है ऊपर और एक ये सरफेस है, इन दोनों के बीच में थोड़े अप्स एंड डाउन्स होंगे, पीक्स एंड वैलीज होंगी. तो whenever it is started moving, so it is like a peaks and valley overlap each other, so it will resist the motion. One thing is that. Another thing is कि इसके जो maybe electrons और इसके protons जो होंगे, they will create a electrostatic attraction. So because of that it will not let it move, it will stop the relative motion. So that is what friction. Don't worry, we are going to study all this in details in the coming chapter. I'm just giving you a hint right now. ठीक है, एक just intuition दे रहा हूँ, but in details we are going to study. So tension is also like the electromagnetic bonds between them. So अगर मैं किसी को यहाँ से पुल करूँगा तो इसके दोनों एटम के अंदर जैसे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, दैट इज ट्राइंग, अगर इसको पुश करूँगा तो दैट इज ट्राइंग टू मेंटेन कि वो दोनों दूर ना जाएँ, तो आपस में दे जस्ट क्रिएट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन टू अपोज दिस फोर्स. तो यहाँ पे जो भी एटम्स होंगे दे जस्ट अट्रैक्ट ईच अदर. सो इनको अगर मैं सेट अपार्ट करूँगा, दूर भेजूँगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अगर मैं दूर करूँगा तो ये आपस में और पास आने की कोशिश करेंगे. सो दैट इज़ गोइंग टू गिव द टेंशन. ठीक है, ऑन ए मैक्रो लेवल. सो टेंशन इज ऑन ए मैक्रो लेवल इज अ पुलिंग force, it applied on rope and strings only and when stretched. So it is always like
what is this tension? Suppose if there's a block here and this is a string and you apply force here, so this force will be transmitted to this block is through the string only, ठीक है, through the tension forces only or through this string only, ठीक है. मैं force तो यहाँ पे लगा रहा हूँ, point of application of force ही है, but the block is moving. It is because the tension has been spreaded over the whole rope, and this is now it's going to apply the same tension here. If we have the ideal rope, then the same tension will be same, this force, same force will be applied here, and the block will be moving this force only, even though I have applied the force at this point, okay. So the rope will transmit the force. It is along the length and it is a pull force only. You can't push it. If you push it, it will get slack and the tension will get zero, okay. And it's always act away from the object or the force, okay. So मोर डिटेल्स इसके ऊपर, इसके क्वेश्चंस वगैरह और मोर इसका डिटेल्स हम लोग बाद में देख लेंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ आई एम गिविंग इट. सेम वे हमारी स्प्रिंग फोर्स होती है, दैट इज़ ऑल्सो द सेम. इट इज़ एन एटॉमिक एंड मॉलिकुलर बॉन्ड स्ट्रेच दैट इज़ रेजिस्टिंग. अगर कुछ किसी को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ जो उसके अंदर के एटम्स और मॉलिक्यूल हैं, दैट इज़ रेजिस्टिंग द पुश दैट इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. सो दैट इज़ अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. सेम विद द कोलिजन ऑल्सो, ठीक है. सो जस्ट कीप इन माइंड कि जितनी भी हमारी जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं विच वी आर सीइंग, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, spring force which you are going to study here, these are all the tension, these are all the contact forces, and these are all the manifestation of electromagnetic force. So micro level पे सब पे electromagnetic force लग रहा है, and these force are just the macro manifestation of that, ठीक है. Then we are going to study this field, this gravity here. So that is one of the forces, and later on we are going to study one more force, which are the frictious forces that we are going to study later, ठीक है. So friction is always opposes the relative motion, and it is always along, say like we have seen कि अगर दो ब्लॉक हैं, so normal will always be perpendicular to both the surfaces, and friction is along the surface. Friction is along the surface. अगर ब्लॉक इधर को मूव करने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन इस पे बैक में लगेगा. Friction always opposes the relative motion. So friction is not like it is a bad thing always. It is useful also and annoying also. Useful like when you, for your walking, without friction you cannot walk. For your walking also you need friction. Even if I am writing it right here like this, so it is because of the friction only I could able to write, okay. And while driving also, the wheels and all, there's a friction with the road. If you don't have a friction you cannot drive. So friction is useful also, and annoying means ke in the machines and all, it is going to lead to the energy losses and heat losses, okay. So it is not letting the mechanical energy conserved, it is letting the mechanical energy loses. So because of that it is kind of annoying sometimes, okay. So friction is working in both the ways, right. So now we'll further move on to our topic, Newton laws of motion, और इसके अंदर we are going to study now the first law. So Newton's laws of motion, this is the understanding the effect of force on the object, ठीक है. Understanding the effect of the force on the object, right. So Newton's laws of motion, understanding the effect of force on the object. So suppose this object is there, you apply a force, ठीक है. How this force is been interacting with this object, and what is the effect it is generating on the object. It is this here to here, like applying of the force, and what is the effect it is generating. So from here to here we are going to study in the Newton's laws of motion, okay. So first law क्या कहता है ये देखते हैं. First law कहता है कि body continues to be in rest, ठीक है. अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी अ मोशन इन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद सेम वेलोसिटी, ठीक है. सो मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स चेंजेस इट्स स्टेट, ठीक है. अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स चेंजेस इट्स स्टेट. सो सपोज बॉडी अगर रेस्ट पे है, टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक वो रेस्ट पे रहेगी अगर वो एक्सटर्नली पुश ना दिया गया होगा उसको. सेम वे अगर बॉडी वेलोसिटी v से मूव कर रही है इन दिस डायरेक्शन, एंड टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी देखोगे इट विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन अनटिल अनलेस सम कोई एक्सटर्नल फोर्स या पुश इसको नहीं दिया होगा टू चेंज इस स्टेट, ठीक है. और हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन और एयर ड्रैग, इट इज़ एन एक्सटर्नल थिंग. सो इफ़ इट्स नॉट देयर, if it's moving, थोड़ा एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज इन आवर लाइफ इट इज़ लाइक फ्रिक्शन और एयर ड्रैग हमेशा रहता है. बट जस्ट टू एनालाइज दिस थिंग, विदाउट फ्रिक्शन एंड एयर ड्रैग, इफ समथिंग इज मूविंग इट विल कीप ऑन मूविंग until time t is equal to infinity
it will keep on moving with the same velocity, ठीक है. So it will keep on moving with the same velocity until some external force going to change the state. So naturally in normal case में ये होता है, if it's moving with v and it will stop after some time. So it is the first observation that we are having कि अपने आप जाके रुक जाता है. But why it is? Because there is some external force, some friction, and the air drag is applicable on that. That's why it is stopping. If it's not there, some external push is not there which is resisting this motion, then it will keep on moving in this direction till time tends to infinity. Okay. So this is what it say कि body की tendency है, inability of a body to change its state. अगर वो रेस्ट पे है भैया, वो रेस्ट पे रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. एक्सटर्नली आप पुश करोगे तभी करोगे. सो बॉडी की इंटरनल इनेबिलिटी है कि टू चेंज इट्स स्टेट इटसेल्फ, ईदर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और द चेंज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अ इनर्शिया. ओके, इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट. ठीक है, रेस्ट की स्टेट रेस्ट, मूविंग की स्टेट मूविंग. सो इसमें हमारा इनर्शिया को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं. और इनर्शिया को क्वांटिटेटिवली हम लोग कहते हैं इट इज़ नथिंग बट द मास, कि जितना बड़ा मास होगा उसका उतना बड़ा इनर्शिया होगा. कि छोटी बॉडी है, अगर स्मॉल बॉडी है 1 kg की और एक अनदर बॉडी है इट इज़ 100 kg, तो जो 10 kg की बॉडी है इट इज़ ईजी टू मूव दिस बॉडी. ठीक है, इट इज़ ईजी टू स्टॉप दिस बॉडी. बट 100 kg की अगर बॉडी मूव कर रही है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप दिस बॉडी अगर ये मूव कर रही है, और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव दिस बॉडी. सो इसका दोनों जो है मेरा बॉडी की स्टॉपिंग भी और मूविंग भी इट इज़ डिफ़िकल्ट. सो वी कैन से इट इज़ हैविंग अ हायर इनर्शिया. सो इनर्शिया क्वांटिटेटिवली अगर मुझे डिफाइन करना है तो नथिंग बट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जितना बड़ा मास होगा उसका उतना बड़ा इनर्शिया होगा. ठीक है. Now the inertia also we'll see that there are 3 set of inertia. One is rest inertia, second is inertia of, first is inertia of rest, second inertia of motion, third is inertia of direction. ठीक है, तो rest, motion and direction. तो पहले हम रेस्ट देखते हैं. inertia of rest क्या है कि बॉडी को कि अगर वो बॉडी रेस्ट पे है इनिशियली, सो इट वांट्स टू बी एट रेस्ट. ठीक है, we'll see it in certain examples, in certain illustration how it is happening. But हमारा जो इंट्यूशन ये है कि अगर बॉडी अगर रेस्ट पे रखी हुई है, ठीक है, और सडन मूवमेंट हो जाए, तो बॉडी की जो फर्स्ट टेंडेंसी रहेगी वो अपने आप नहीं मूव करेगी. इट इज़ अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट दैट मूव. वो दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ इनेबिलिटी, दैट इज व्हाट वी कॉल अ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है, तो देखते हैं कि इफ़ अ बस इज स्टैंडिंग, ठीक है, अगर बस खड़ी हुई है यहाँ पे and a person is sitting in the bus, ठीक है, person is sitting in the bus and all of a sudden bus started moving. अभी क्या थी state person की, it is the rest state, and bus all of a sudden started moving. What you feel that you are pushing back, that you go back if the bus started moving. Why it is happening? Because your body is a tendency to be at rest only, and but the bus started moving front, but your body tendency is to stay at rest. So that's why you will feel like you are pushing back. Okay, so that is like first case. Second is coin and tumbler example. Like this is tumbler and there's a light sheet on this. If I place a small coin on this, if I just give it a flip to this sheet, the coin will drop down. It will not go along the the sheet. The coin will drop down. Why? Because it is a inertia of the coin to change its motion with some sudden jerk. ठीक है, वो अपनी it is difficult for the coin to change its motion. अगर स्लो मूविंग करा रहा हूँ मैं, तो the coin will move along with the coin will move along here. अगर इसका स्लो मोशन हो रहा है, इसका जो मेरा टम्बलर के ऊपर मैंने प्लेट रखी है उसको स्लो मूव कराऊंगा, द कॉइन विल मूव अलॉन्ग दैट. अगर मैं उसको सडन जर्क दूंगा एक, सो द कॉइन विल फॉल डाउन. सो इट इज़ शोइंग द टेंडेंसी ऑफ अ रेस्ट, कि कॉइन अगर रेस्ट पे है तो वो एकदम से मोशन पे नहीं आएगा. इट विल रेजिस्ट दैट मोशन, सो उसका इट विल फॉल. इट इज़ अ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ओके, देन थर्ड एग्जाम्पल है इसके, एक स्ट्रिंग है, ये ए हो गई, ये बी से टाइड है, देन द बी हो गई. अगर मैं इस पर सडन फोर्स लगाऊंगा यहाँ पे, सो द बी विल गेट break, because ये जो force है it will not transmit it to A, because B is at a state of inertia. ठीक है, it will not let this force to be transmitted here. ये अभी inertia पे है, so B will break if we give a sudden jerk. If you give a jerk, if you pull it steadily, slowly, then A will break, because now this force has been transmitted to this point A. Now A is going to get break. Okay, so it is showing कि m initial at the initial पे जब वो sudden jerk हुआ और slowly जब pull कर रहा हूँ मैं, that inertia is going down, then B is also starting contributing in this. Okay,
So that is what we call a inertia at rest, के tendency of a body to be at rest if you give a sudden push. Second is my inertia of motion. ठीक है, सो अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में और एकदम से स्टॉप कर दूँ तो बॉडी फील लाइक इट विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, सो दैट वी हैव सीन इन एग्जांपल. अगर बस की एकदम से ब्रेक लग जाए यू लर्च फॉरवर्ड. ठीक है, बस में एकदम ब्रेक लग जाए लर्च फॉरवर्ड. दैट इज बिकॉज कि योर बॉडी इज इन द मोशन अलॉन्ग विद द बस. एकदम से ब्रेक लगी, योर बॉडी स्टार्टेड मूविंग इन फ्रंट. दैट इज व्हाट वी कॉल inertia of motion. ठीक है, inability of body to change its motion, uniform motion. बॉडी ऑलरेडी मोशन है, अपने आप बॉडी नहीं चेंज हो रही है, सो इट इज़ द inertia of motion. ठीक है, सेकेंड इज वी हैव सीन इन अ ट्रेन के ऊपर अगर जो कंपार्टमेंट होता है, फिर पुट अ लगेज ऑन दैट एंड द ट्रेन ऑलरेडी स्टॉप. ट्रेन को एकदम से सडन स्टॉप मिल जाए तो दिस लगेज स्टार्टेड मूविंग इन फ्रंट डायरेक्शन. ठीक है, वो स्लाइड करने लगेंगे ऊपर उस पर लगेज डिपार्टमेंट. सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द inertia of motion. Then we are having the inertia of direction. Inertia of direction में क्या होता है कि इवन अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो पार्टिकल द ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन इंस्टेंटेनियसली. ठीक है, सो इफ दिस व्हील इज रोटेटिंग, ठीक है, इफ दिस व्हील इज रोटेटिंग, सपोज दिस इज अ साइकिल व्हील, सो इफ इट्स इज रोटेटिंग, तो यहाँ से जो मड आएगी ना, दैट मड विल नॉट रोटेट इट अलॉन्ग दिस, दैट विल स्पिल इट ओवर लाइक दिस. ठीक है, इस डायरेक्शन में स्पिल होगी ये. अगर ये साइकिल है मेरी, इफ दिस साइकिल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, if the cycle is moving in this direction, तो आपने देखा होगा कि the mud is following this thing, the mud इस तरीके से बाहर निकलती है. तो that is just कि जो mud के जो particles हैं उसकी inability to change its motion. ठीक है, वो change direction इस तरीके से नहीं अपनी direction change कर पा रहे हैं. that is their inability to change its direction, so that's why they are going in this direction. ठीक है, that is what we call a rotating wheel. Mud's thrown out tangentially. Same way when you're sitting in a car and the car is taking a turn, ठीक है, your body is at rest, it will not adjust to that turn, so your body will be pushed outward. ठीक है, आपकी बॉडी को बाहर पुश कर दिया जाता है, your body will be pushed outward. that is because of inertia, because your body does not adjust to that turn. जब आप टर्न लेते हैं इस पे ना, so your body will be pushed towards outer side. so that is what a inertia of direction. ठीक है, that's what the inertia of direction. सो नाउ वी हैव कंक्लूडेड. तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि नेचुरल स्टेट मेरी दोनों है, रेस्ट भी है मोशन भी है, मेरी दोनों नेचुरल स्टेट है. अगर बॉडी रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे रहेगी, दैट मीन्स बॉडी पे अपने आप में कोई टेंडेंसी नहीं होती अपनी स्टेट को चेंज करने की. एक्सटर्नली ही बॉडी पे कोई चेंज आ सकता है, अपने आप बॉडी अपने आप को चेंज नहीं कर सकती. दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ इनर्शिया ऑल्सो. अगर बॉडी रेस्ट पे है वी कॉल इट अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. अगर बॉडी मोशन पे है, यूनिफॉर्म मोशन में है, वी कॉल इट अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, मोशन पे यूनिफॉर्म एंड नो नेट फोर्स रिक्वायर्स टू सस्टेन इट. ठीक है, सो अगर बॉडी अगर मोशन पे है तो इट विल कीप ऑन मूविंग. इसको कोई कंटिन्यूस फोर्स नहीं चाहिए, जैसा कि वी हैव सीन द एरिस्टोटल लेगेसी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है उसको कांस्टेंट फोर्स चाहिए. बट हेयर विद द फर्स्ट लॉ वी हैव सीन अगर कोई बॉडी मोशन पे है, इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्सेस देयर, सो कोई फोर्स नहीं चाहिए उसको सस्टेन करने के लिए. इट विल कीप ऑन मूविंग. ठीक है, थोड़ा इसको इंट्यूटिवली देखना डिफ़िकल्ट है क्योंकि in all our cases if any motion is happening it will get stopped because of air drag and friction. बट अगर वो दोनों नहीं, दैट इज़ अगेन एक्सटर्नल फोर्स, अगर वो दोनों ही नहीं है तो दैट मोशन विल बी कंटिन्यूस. ठीक है, वो कभी नहीं रुकने वाला. ठीक है, दैट विल बी अ परपेचुअल मोशन. राइट, सो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो अभी हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा कि अगर बॉडी अगर रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी. ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होगी, मोशन अगर है, अगर वो बॉडी अगर मूविंग कर रही है तो मूव करती रहेगी, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, कोई उसका में स्टॉप नहीं होगी अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया गया. बट दिस इज़ ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इट विल नॉट बी वैलिड इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर गोइंग इन अ बस, इफ़ यू गोइंग इन अ बस, ठीक है, ये बस में आप जा रहे हैं एंड इफ़ यू आर सिटिंग इन अ बस एंड ऑल ऑफ अ सडन बस अभी मूव कर रही है, सम एक्सेलेरेशन एंड ऑल ऑफ अ सडन इट स्टॉप, इट ब्रेक, यू फील अर्च फॉरवर्ड. आप आगे की साइड में गिरने लग जाएंगे. वाई? इट फील्स लाइक यू आर गेटिंग अ फोर्स फ्रॉम आउटसाइड बट देर इज़ नो एक्चुअल फोर्स, बट स्टिल you feel like you have been pushed from the backward, but there is no external force on this. But now it is saying, now as per the first law, if there is no external force,
मोशन शुड नॉट बी देयर. अगर वो रेस्ट पे है बॉडी तो रेस्ट पे रहनी चाहिए. तो इस केस में भी आपके ऊपर कोई फोर्स तो लग नहीं रही है. देन हाउ कम इट इज़ मूविंग? सो इट फेल्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहनी चाहिए. ठीक है. सो इट फेल्स न्यूटन फर्स्ट लॉ. देन सेकेंड केस कि इफ़ यू आर गोइंग इन अ ट्रेन सपोज. ठीक है. ट्रेन में आप जा रहे हैं, यू आर सिटिंग इन द ट्रेन. ठीक है. यू आर मूविंग, योर ट्रेन इज मूविंग विद सम एक्सलेशन. जो आपके साइड में ट्रीज बने हुए हैं, दैट ट्रीज यू फील लाइक इट इज़ मूविंग बैकवर्ड इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन इज मूविंग बैकवर्ड इन दिस डायरेक्शन, बट एक्चुअली ट्रीज आर द रेस्ट. देन हाउ कम दे आर मूविंग, दे आर एक्सलेटिंग इन दिस डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन? अगर वो रेस्ट पे हैं, उनका मोशन कैसे हो रहा है? देन हाउ इट इज़ मूविंग? इफ़ यू फील, इफ़ यू आर मूविंग इन अ ट्रेन, ट्रेन से आप बाहर ट्रीज को देखते हैं, दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, but actually they are at the rest, but with respect to you they are moving opposite to your direction. So that is again, it is because of the frame where Newton's laws of motions, first laws of motion is not valid, or all the Newton's laws are not valid. So we need to define certain frames where Newton's laws are valid, or we have to make the frames where we have to do some adjustment where we can apply the Newton's laws. Okay, so first of all, Newton's laws are applicable only in the inertial frame of reference. And what is the inertial frame of reference? Okay, so we have seen Newton's first law not applicable for all the references frames. We have seen in our bus example. Same way, merry-go-round. Okay, you have been thrown, if you sit in a merry-go-round, if you've been thrown outward, there is no real force on you, but still you have been pushed outward. So again, that is again violating with the first law कि कोई external force नहीं है, still you are changing your state. So that is against the law of inertia. So Newton's laws is not valid. So the problem here is कि Newton's law valid only in the inertial frame. Inertial frame क्या होता है कि उस फ्रेम का एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए. ठीक है. अगर आप कोई मेरी को राउंड में बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन हमने देखा था, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सिलरेटेड. सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सिलरेटेड, दैट मीन्स एक्सिलेशन इज नॉट जीरो, सो इट इज़ अ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. सो इन द नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, न्यूटन्स लॉ विल नॉट बी वैलिड. You have to do some adjustment with some fictitious force that we are going to see it later. Artificially fictitious force के साथ adjustment करने पड़ेगा, then you can apply only Newton's law in non-inertial frames. ठीक है. So inertial frame is where acceleration of the frame is zero, or it is moving with some constant velocity, then only we can say it is a inertial frame. Here you can apply the Newton's first law of motion or Newton's laws of motion. ठीक है. So we have seen it here. All these things, it seems like accelerating, even no force acts on it. ठीक है. So to make any, if you have to observe this motion, you have to apply some artificially fictitious force on it. So to apply for the application of Newton's laws, ठीक है, that we are going to see, which we call a pseudo force. In the coming part of our chapter, we are going to see in details this. But Newton's law can be applied only in the inertial frame. What is inertial frame? Where the frame is having the acceleration zero, it is not moving, or it is moving with a constant velocity. अगर वो accelerate कर रहा है, then we can say it is not a it is a non-inertial frame, and there is a way to adjust non-inertial frame into the inertial frame and apply the Newton's laws. Okay. Now we will see before we go into the Newton's second law. So first law हमारा finish हो गया. So first law gave the कंक्लूजन ऑफ लॉज ऑफ इनर्शिया का कंक्लूजन दिया, और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का उसने एक आइडिया सेट किया. सो नाउ विल बी हैविंग न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ से पहले वी हैव टू स्टडी द लीनियर मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम? सो मोमेंटम इज नथिंग बट द क्वांटिटी इन मोशन. ठीक है. कि मोशन के पास कितना मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो कितना रेजिस्ट करेगी टू बीइंग स्टॉप्ड और रीडायरेक्टेड. ठीक है. इट इज़ लाइक इफ़ यू आर हैविंग अ बिग ट्रक विच इज़ कमिंग, सपोज इज अ बिग ट्रक ऑफ 1000 kg एंड इज मूविंग विद 50 km/h की स्पीड से मूव कर रहा है. ठीक है. सो एंड इफ़ यू कंपेयर इट विद सम स्मॉल 1 kg ब्लॉक एंड इट इज़ मूविंग विद 1 km/h की स्पीड से. सो इफ़ यू सी के this is having more motion and this is having less motion. Motion means quantity it is carrying, like how massive is this, how fast it is moving and in what direction it is moving. ठीक है. So if it's moving in this direction, so it is carrying some momentum. Carrying some momentum means कि इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए या इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए किस में ज़्यादा मेहनत लगेगी, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में. सो दैट इज मीन्स कि इट इज़ हैविंग अ मोर क्वांटिटी इन इट्स मोशन.
ठीक है. सो इसको डिफिकल्ट होगा मेरे को स्टॉप करना. इसको डिफिकल्ट क्यों होगा? बिकॉज इट इज़ हैविंग मोर क्वांटिटी इन मोशन. और क्वांटिटी इन मोशन को हम लोग कैसे मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं? दैट इज़ नथिंग बट योर m इंटू वी. उसका मास कितना है? इफ़ यू मल्टीप्लाई इट बाय वेलोसिटी एंड इट विल गिव द this v is the instantaneous velocity at that time. So mass into velocity is giving you the quantity of motion. ठीक है. And the direction of this quantity of motion, linear momentum, is the direction of the velocity. ठीक है. अगर velocity इस direction में तो my linear momentum is also in this direction. ठीक है. So velocity की डायरेक्शन ही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन देती है. लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट के मोशन के अंदर कितनी क्वांटिटी है. उसका मतलब है कि उसको स्टॉप करना होगा तो किसको ज़्यादा मुश्किल होगा स्टॉप करना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी, किसको ज़्यादा चेंज करने में डायरेक्शन लगेगी. सेम वे इट इज़ नॉट ऑलवेज कि मास ज़्यादा बढ़ाओ. यू कैन हैव वेरी हाई स्पीड्स लाइक इन बुलेट केसेस. सो बुलेट इज मूविंग विद अ वेरी हाई स्पीड बट वेरी स्मॉल मास. सो स्टिल इट इज़ हैविंग वेरी हाई मोमेंटम. ठीक है. उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत हाई है. अदर वे इफ़ यू हैव वेरी लार्ज मास मूविंग विद अ स्मॉल वेलोसिटी देन ऑल्सो इट इज़ हैविंग अ वेरी हाई मोमेंटम. लाइक ट्रक इज मूविंग और अ स्मॉल साइकिल इज मूविंग. इफ़ यू कंपेयर दैट. ठीक है. सो सेम वे cycle and truck, same initial velocity but truck is having, because of mass, more quantity of motion. Same way if the bullet is moving and if you are running, then obviously bullet is way much faster, so it is having very high momentum, so it is very much difficult to stop it. So it is having very high quantity of motion, right? So because Newton's second law is based on the linear momentum, that's why we have studied the linear momentum before. So linear momentum is quantity of motion, कितना quantity of motion है. ठीक है उसमें. So now what does the second law says? Second law says के second law is give us a nice mathematical framework कि how cause and effect is related. That is the fundamental के that is just कि अगर cause है तो इसके बीच में जो bridge है that is the Newton's second law. ये जो ब्रिज है कॉज और इफेक्ट के बीच में, द प्रिसाइज ब्रिज इज न्यूटन सेकेंड लॉ. सो क्या कहता है वो? कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एंड दिस एक्सटर्नल फोर्स शुड बी अनबैलेंस्ड फोर्स. इट इज़ नॉट लाइक कि आप एक बॉडी है इस पर आप एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दो 10 और इधर भी 10 लगा दो. सो इट इज़ अ बैलेंस्ड फोर्स. ठीक है. देन इन दैट केस द न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो. ठीक है. देन न्यूटन सेकेंड लॉ विल बी एप्लीकेबल. इट is not a universal law but it will be applicable here with zero force, so it will not produce any effect. ठीक है. It will not produce any effect. To see any effect we need to have an unbalanced external force applied. In the direction of the force applied you will see the effect. ठीक है. तो वो इफेक्ट क्या होगा? उसकी लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगी. ठीक है. लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगी, या तो उसका मास बढ़ेगा या कम होगा, या उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी. ठीक है. सो अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर वो मूव कर रही है पहले या स्टेबल है और आपने कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई इस पर, सो इसका बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा. ठीक है. दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट इज इक्वल टू योर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. ठीक है. अगर ये रेस्ट पे है देन स्टार्टेड मूविंग विद सम वेलोसिटी v1. सो सपोज इन इट इज़ एट 0, नाउ इट स्टार्टेड मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 seconds and it's having 1 kg mass. So the rate of change of momentum, we can say rate of change of momentum is because of the external force, unbalanced external force applied, and the change in momentum is in the direction of the force applied. That means the change in speed will come in the direction of force applied. Okay. So if you have a object here and you apply a force in this side, so the rate of change of momentum or the velocity change will be happening in this side only. ठीक है. Because of this force. Okay. So you can do the component this side and this side, but the change आएगा जो actual change will be along the direction of the force. ठीक है. In the direction of the force applied. So mathematically it can be written down, force external that should be unbalanced and resultant forces के सारी forces जितनी भी है, अगर एक बॉडी है इस पर अगर 1 2 3 4 5 जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं इसका रिजल्टेंट, एंड इट शुड बी अनबैलेंस्ड. अगर ये सारा बैलेंस्ड है सो ऑब्वियसली एफ एक्सटर्नल विल गेट जीरो, देयर इज़ नो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है. सो सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट एफ रिजल्टेंट एंड इट शुड बी अनबैलेंस्ड, देन इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस dp by dt, rate of change of linear momentum. ठीक है. then it's going to produce rate of change of linear momentum, right? So f external is equal to dmv by dt, and
here we put the value of momentum, the quantity of motion. Now it is having two terms, mass and velocity. So if you open it with the our multiplication rule in differential, so if you open it, so it will become dm by dt. Okay, if the mass is changing into into the velocity plus m. Okay, if the mass is constant, if we keep the mass constant, the velocity is changing. Okay, so these are the two ways. So if the mass is changing and the mass is constant, then how the velocity is changing. So this is what by न्यूटन सेकेंड लॉ. ठीक है, इसके अंदर हमारे केसेस हो सकते हैं कि इफ़ द मास इज कांस्टेंट, इफ द मास इज कांस्टेंट, तो जितनी भी एक्सटर्नल फोर्स है इट विल डायरेक्टली गोइंग टू इंक्रीज द वेलोसिटी. ठीक है, अगर मास कांस्टेंट है. सपोज अगर 10 मैंने एक्सटर्नल फोर्स, अगर मेरी नेट अनबैलेंस्ड रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स 10 आ रही है, तो 10 की 10 सारी इस मोशन, इस क्वांटिटी को मिल जाएगी. एंड दिस क्वांटिटी में जो वेलोसिटी इस मास की अगर ये है, तो फॉर दिस मास द वेलोसिटी विल बी इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली. ये पूरी की पूरी 10 मिल जाएगी. अगर सेकंड केस है, उसका मास भी इंक्रीज हो रहा है. सपोज यहाँ पे 10 है बट इट्स मास इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो इसमें से 10 में से कुछ एक, सपोज 3 पोर्शन इसको मिलेगा बिकॉज द मास इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड 7 इसको जाके मिलेगा. ठीक है, इसका 10 का 7 इसको जाके मिलेगा. सो दैट मीन्स यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा दैट इज लेसर देन व्हेन माई मास इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, व्हेन माई मास इज कॉन्स्टेंट. थर्ड केस में अगर ये मास इज डिक्रीज कर रहा है, मास डिक्रीज कर रहा है, तो इट विल प्रोड्यूस अ थ्रस्ट. तो एक नेगेटिव यहाँ पे जो मास अगर डिक्रीज कर रहा है, सो दैट मास इज इनिशियली अगर 10 kg है, फिर वो 7 kg हो गया. सो dm by dt विल बी नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स कि इट इज़ गोइंग टू गिव अ अपोजिट साइड थ्रस्ट. सो अपोजिट साइड थ्रस्ट मीन दिस वैल्यू इज गोइंग टू एड अप इन द एक्सटर्नल फोर्स. सपोज एक्सटर्नल फोर्स अभी आपका 10 था और 10 था, एंड द मास इज रिड्यूसिंग, एंड दिस विल बी -3 नाउ. Now it will go here. Now your total 13 will be given to this. ठीक है, now your total 13 will be given to this. Now more change in velocity is going to happen in this. ठीक है, so if you see it again, so total external force will be given to two quantities. या तो आपका rate of change of mass होगा. ठीक है, अगर वो mass constant है तो the whole quantity will go to change in वेलोसिटी. ठीक है, उसका मास कांस्टेंट है, द होल क्वांटिटी विल गो टू चेंज इन वेलोसिटी. अगर आपने इनिशियली अगर 10 दिया, उसको एक्सटर्नल फोर्स नेट आपका 10 आया, तो 10 का 10 आपका वेलोसिटी को इंक्रीज करने में चला जाएगा. ठीक है, अगर सेकंड केस है, अगर आपका मास भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, योर मास इज इंक्रीजिंग, सो ये 10 है तो इट इज़ बीन रिड्यूस्ड. ठीक है, तो ये इसको पूरा का पूरा इसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई दैट इज़ नॉट मच. अगर पहले केस में आपकी वेलोसिटी जो ये 5 से 10 इंक्रीज हो रही थी, तो नाउ इट विल बी 5 से 7. ठीक है, इट विल नॉट बी इंक्रीज टू 10 बिकॉज पार्ट ऑफ दिस 10 इज बीन गोइंग इनटू दिस इंक्रीज इन मास इनटू वेलोसिटी, प्लस अब मास बढ़ गया इसमें. ठीक है, तो ऑब्वियसली dv by dt विल बी रिड्यूस. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू हैपन. थर्ड केस में अगर आपका मास रिड्यूस कर रहा है, तो मास रिड्यूस की वजह से कि इसमें नेगेटिव साइड थ्रस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा. तो दिस नेगेटिव साइड थ्रस्ट इज गोइंग टू एड अप हेयर. सो सपोज दिस 3 विल बी प्रोड्यूस, सो इट इज़ 10 ऑलरेडी, सो 3 विल बी एड अप हेयर. सो नाउ 13 will be available to this value, and your mass is already reducing. ठीक है, mass is already reducing, so this term is going to increase more. ठीक है, you got it ना, this term is going to increase more. यहाँ पे ऑलरेडी मास रिड्यूस कर रहा है, पहले जो मास था उससे भी कम हो गया. सो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली क्वांटिटी में जो सेकंड टर्म है दैट इज़ फर्दर इंक्रीज मोर. ठीक है, दैट इज़ फर्दर, और ऑलरेडी मेरी जो क्वांटिटी में थ्रस्ट हो गया वो ऑलरेडी 13 हो गया, पहले से बढ़ गया 3. ठीक है, सो बट एनीवेज फॉर आवर इनिशियल डिस्कशन वी आर गोइंग टू टेक dm by dt is equal to 0. वेरिएबल मास सिस्टम हम लोग when we are going to study center of mass वाला चैप्टर पढ़ेंगे in mechanics 2. then at that time we are going to study the variable mass system. in this Newton's laws हम लोग नहीं पढ़ेंगे. इसमें आइडियल केस हम लोग लेके चलेंगे कि हमारा मास इज कांस्टेंट, so all this external will going to increase the dv by dt. ठीक है, is going to increase the momentum, rate of change of momentum dv by dt में. ठीक है, so what is dv by dt is nothing but your acceleration. dv by dt is nothing but your acceleration. So mass is constant, so f external is going to increase your acceleration. So this is I've told you multiple times in the kinematics. So cause is some external push and this is the effect. So acceleration is the effect. ठीक है, so हमने kinematics में हमने acceleration motion में जब भी देख रहे थे velocity acceleration even in rotation uniform circular motion also, there also we were seeing के normal acceleration, tangential acceleration. So these are all the effects. ठीक है, but actual cause is the f external. So this is the effect. It is not like acceleration है तो
फोर्स आ रहा है, नो, फोर्स है तो एक्सीलरेशन आ रहा है, एक्सीलरेशन है तो उसकी वजह से फोर्स नहीं आया, फोर्स है, मल्टीपल फोर्सेस हैं, उसका रिजल्टेंट फोर्स जो निकला अनबैलेंस्ड, उसकी वजह से आपका एक्सीलरेशन आया है, ठीक है। तो फोर्स गिव्स द एक्सीलरेशन, सो दिस इज द कॉज, दिस इज द इफेक्ट। सो नाउ एक्सीलरेशन is directly proportional to the resultant unbalanced force and it is inversely proportional to mass. That means अगर बॉडी का मास ज़्यादा है, अगर सेम एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, अगर मास कम है तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। इट्स क्लियर। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन to some important points in second law of motion. Let's see that. So उसके अंदर कह रहा है कि F फिजिकल टू ma है, ठीक है। तो अगर F ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग विद द फर्स्ट लॉ, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी रेस्ट पे है मेरी और एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है तो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा उसमें, ठीक है। अगर बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, इनिशियल अगर बॉडी v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है तो अगर कोई फोर्स नहीं है तो फाइनली वो v1 वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, एक्सीलरेशन उसका जीरो रहेगा। तो दैट इज वैलिड विद द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ इज फॉलोइंग अप द फर्स्ट लॉ इटसेल्फ। सेकंड इज वी हैव सीन कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, ठीक है। यू कैन राइट इट डाउन कि अगर इस डायरेक्शन में मेरी फोर्स चेंज हो रही है तो अगर इनिशियल इसकी mv1 इस डायरेक्शन में, सो mv जो वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में आएगी, तो दैट इज ओनली वी हैव टू कंसीडर। सो फोर्स इज गोइंग टू change the velocity in this direction, so mv2 minus mv1 divided by t, जो जितने इस t टाइम पीरियड में, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन टाइम पीरियड t, so that will be the, that is a change in velocity in this direction. But for your convenience, we know we can break it down into the coordinate system, 2D coordinate. So but actually it is this force is going to change the speed, momentum in this side only, but for our convenience we just change this. There is no such force is like f sin theta is happening here or f cos theta is happening here. It is just for our calculation purpose we are splitting this force into two component. So this component is going to give this speed and this vertical component is going to give this speed, or resultant is coming in this direction. But actually we have to say कि force की direction में ही change in momentum आएगा, ठीक है। That is what actually we have to say, but it is for the our calculation sake purpose we can write it down. We can split the force in this direction and this direction. So this force is going to change vy and this force is going to change vx, और इन दोनों का जो आएगा resultant is coming in this direction, right? That is what it's saying. Third is f is equal to ma जो है ना, that is valid for the point masses only. But so if you say if this big object is there, because if we apply a force here, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ फोर्स किस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं दैट ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज इफ़ यू अप्लाई फोर्स सेंटर तो ऑब्वियसली इट विल पुश फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स सपोज not in the center and the mass is like this and you apply force this, so it is having a tendency to rotate also. It is because point of application of force यहाँ से थोड़ा दूर है, सो इट हैज़ ए टेंडेंसी टू रोटेट ऑल्सो। सो जो फोर्स का जो है ना, कुछ कंपोनेंट इसका रोटेशन में चला जाएगा, कुछ कंपोनेंट इसको एक्सीलरेट करने में चला जाएगा। सो इसकी एक्सीलरेशन उतनी नहीं होगी। द फोर्स इज नाउ बीन यूज्ड इन योर रोटेशन ऑल्सो एंड लीनियर मोशन ऑल्सो एंड रोटेशनल मोशन ऑल्सो, ठीक है। सो इन दैट केसेस the acceleration then f is equal to ma will not be applicable, because here the force is not directly leading to your acceleration, here it is also leading to the rotational impact also. So in that also we cannot apply. So but when we have the, because of center of mass, we can say okay, if this is a center of mass we can apply it to the rigid bodies, but otherwise it is for the point masses f is equal to ma. But we can apply it to the rigid bodies in a sense that if it's a rigid body and we can say the center of mass is lying here, so we can say the f is here, then f is creating the acceleration f is equal to ma, ठीक है। if we can use the concept of center of mass, ठीक है, we can use the concept of center of mass and we can apply it to the rigid bodies, ठीक है, we can apply it to the rigid bodies with multiple particles also, that we are going to study later in the center of mass chapter. But actually f is equal to ma is for the point masses, ठीक है, but with the application of center of mass we can apply it to the extended bodies also. In that case f is equal to mass into acceleration of center of mass, right? That all this center of mass and all these things is a scope of our
मैकेनिक्स 2 जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ बी यू से यू जस्ट अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास application we can use it on the extended bodies also, otherwise this is applicable on the point masses. Now if you have been given a PT momentum time graph, the momentum time graph is जो इसका जो स्लोप है दैट इज गोइंग टू गिव यू द फोर्स, ठीक है, बिकॉज वी नो फोर्स एक्सटर्नल इज नथिंग बट dp/dt है, तो dp/dt इज नथिंग बट इज फोर्स, और इसका जो स्लोप होगा at every point it is going to give you the force at that point. So it is a positive force here, if you see it is a negative force. Okay, so now there's one important concept, is it is a fundamental concept, principle of linear momentum. It is like a trading. So if you suppose you are having 100 rupees, okay, you have a chance to spend it in 1 day, 2 day, 5 days. So you can spend it in any days. If you want to spend it in 1 day, you can spend 100 whole rupees. If you want to spend in 2 day, 30, 70, 50, 50, any combination. Here also if you want to spend in 5 day, 20 into 5 you can do, are then 20 rupees. So but overall it is going to remain same. So initially whatever it is there, so finally also it is there, but you can do a trading. Like if you have to spend it in 2 day, you can do a trade. 70 30 70 का कर सकते हो, 50 50 का कर सकते हो, 70 30 का कर सकते हो, 45 55 का कर सकते हो. That is an internal trading, but the overall will be constant. So you can say principle of conservation of linear momentum is like trading between the objects, ठीक है, trading between the momentum. Okay, it is like a trading between the momentum. So let's see how it is there. So I know my for f external is nothing but rate of change of linear momentum, ठीक है. If some external unbalanced resultant force is applied on an object, it's going to change its momentum. So that rate of change of linear momentum is nothing but my f net, ठीक है. If f net is 0, if a body is there, this body is there, if no external force is applied on this, and it broken down into two pieces, ठीक है. So if no initial, and one piece is going in v1 direction, one piece will go in the v2 direction. So whatever is the initial one, so the final one will also be the same. So now initial one is 0. Now it is having two velocities right now, so it will adjust in a manner, so finally it will also result in a final momentum will also be 0. So m into v finally also will be 0. So final, the trading happen in a manner, okay, the result will be whatever it's the initial one. When the f external is 0, there is, the system is isolated, no external force is there. So we have seen it's, while we have seen during the interaction of interaction in two bodies. So जब भी हम इंट्रैक्शन इन टू बॉडीज़ वाले केसेस में देखेंगे, वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, इन दोनों बॉडीज़ के इंट्रैक्शन में we study there is no external force. We can consider these two bodies are isolated bodies, and with these two bodies we can apply the conservation of linear momentum. अगर कोई external force नहीं है तो linear momentum conserve रहेगा, जो initial रहेगा वो final रहेगा linear momentum, ठीक है. No external forces है. So we'll see the example, bomb explosion. एक बॉम्ब है, इनिशियली अगर रेस्ट पे रखा हुआ है, एंड दिस बीन एक्सप्लोडेड इनटू m1 m2 m3 m4 m5, ठीक है. इनिशियली 0 पे इसका टोटल मास m है. सो नाउ दिस टोटल मास m, 0 वेलोसिटी, विल बी ट्रेडेड इनटू 5 1 2 3 4 5, ठीक है, और दे आर मूविंग इन डिफरेंट सेट ऑफ डायरेक्शन. बट इन सब का जो मैं वेक्टर सम लूँगा, m1 p1, अगर सारी मोमेंटम का लूँगा, p1 p2 p3 p4 plus p5, that will all result 0, because initially it was 0 and no external push is there, only internal forces. Only because of internal forces the bomb get busted. So no external force means no external change in momentum, ठीक है, because change in momentum is produced by some imbalanced external resultant force. Okay, so जितना भी मोशन हो, जितना भी एक्सटर्न इन सब का मोशन होगा, जिसकी वजह से इसमें जो भी मोमेंटम आएगी, सो दैट मोमेंटम विल बी 0. तो बट वी हैव टू कंसिडर द डायरेक्शंस ऑल्सो, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ओनली. सो वेक्टरली ऐड करना है, ऑल द वी हैव टू ऐड इट वेक्टरली, ठीक है, नॉट जस्ट द मैग्नीट्यूड. सेम वे, फॉर एग्जांपल द बुलेट एंड द गन. सो इफ यू
this bullet. If you fire a bullet from here, if you fire a bullet from here, ठीक है, so क्या होगा, bullet will gain some speed in this direction, and you have observed a recoil of the gun in the back side. So that is nothing but it's a case of linear momentum का conservation. कैसे होगा, initial linear momentum दोनों है, because bullet and gun is rest. एकदम से bullet जब बाहर निकल के जाएगी, so to conserve this thing कि final भी rest पे होना चाहिए, so the mass this rifle also kick back, the rifle also, the gun also recoils. So how we'll see, initial momentum is 0, final momentum अगर velocity of bullet is m in this direction, ठीक है, and this is the mass of the bullet plus mass of gun into velocity, and if we calculate this velocity, it comes out to be this in opposite direction, right? Same way we'll be having the cases of man and boat. So man and boat is an isolated system, no external forces there. So if this is a shore and this is a boat, if the man jumps from boat to the shore, the boat will move in this direction. So if we consider boat and man as a system, there is no external force internally. The man will move in this direction, the boat will move in this direction, and the final momentum will be conserved as equal to initial momentum, ठीक है. Same way astronaut in an open space. So if astronaut has to move in the open space, so what astronaut does, he throws the object in the opposite direction. So because he's throwing the object in opposite direction, his move will be in opposite, it's towards the opposite direction. Suppose this is like that, if you throw a ball this side, you will move this side, okay. Astronaut will throw a ball this side, the ball will go here, and your motion will be this side, okay, to conserve the linear momentum. So ठीक है, it is like trading कि आपने इधर बॉल फेंकी, आप इधर मूव कर गए, ठीक है. So rocket propulsion is a best example for conservation of linear momentum. So this we are going to study in the variable masses, but here I'll just give you a hint. So here what is happening, we have seen the F external is nothing but your change in mass into T plus mass into dv by dt, rate of change. This is a rate of change of momentum. If my F external is 0, I'm only having these two terms. The rocket के अंदर क्या होता है, the fuel is keep on burning, so the mass of the rocket is reducing, ठीक है. So it is a case of change in, it is nothing but a change of variable mass. The mass is reducing, so mass reduce करेगा, so this value comes out to be negative, so it is going to give the upward thrust. The mass is reducing from here, so it will come up here. So now this term is going to give the upward thrust to this, but here mass is keep on reducing. So suppose पहले mass m है, तो obviously dv by dt, this both terms will be constant. This अगर ये दोनों term मेरी constant है 100, ठीक है, पहले mass था मेरा 10, तो dv by dt comes out to be 10, ठीक है. अगर मेरा ये constant है 100, अगर मेरा mass हो गया 1, तो dv by dt will be obviously 100. So my mass is reducing, so obviously this velocity will keep on changing with time. So there is a very high acceleration. Thus the dv by dt will keep on changing with time, okay, because the mass is reducing, and this thing is not constant here, because dm by dt is also changing. So in the rocket scenario, so just to give you a hint on this, so suppose this is our rocket, and this fuel is coming out of it. So we can say dm fuel is coming out of rocket at certain instant of the time. So initially it is moving with initial momentum is mv. So now after certain amount of the time, dm mass is coming out of this rocket, okay. dm mass with some velocity, you can say u, it is coming out, okay. dm mass with velocity v. So at that time when the dm mass came out, रॉकेट का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, m माइनस डी एम हो जाएगा, बिकॉज डी एम हैज बीन रिड्यूस, ठीक है. और इसकी वेलोसिटी कितनी गेन हो जाएगी, टी प्लस एम प्लस डी वी, ठीक है, बिकॉज मास रिड्यूस हुआ यहाँ से, दिस टर्म इज कॉन्स्टेंट, मास रिड्यूस हुआ, सो दिस शुड बी इंक्रीज. सो डी एम माइनस डी एम रिड्यूस, एम वी प्लस डी वी गॉट इंक्रीज, ठीक है. सो इनिशियल मोमेंटम मेरी क्या थी, एम इंटू वी. फाइनल मोमेंटम कितनी होगी मेरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना है मेरा, डी एम मेरा dm by dt, ये जो मेरा dm निकला है. वेलोसिटी ऑफ दिस एग्जॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, बिकॉज रॉकेट इज मूविंग हेयर v,
तो and the exhaust is coming out u, so इसकी velocity ground observer को कितनी दिख रही होगी, v minus u, ठीक है, v minus u. तो it will be velocity of rocket plus velocity of exhaust with respect to rocket, that is a velocity of exhaust with respect to ground, ठीक है. So velocity of rocket कितनी है, u in plus v in plus direction minus velocity of exhaust with respect to rocket is u, so it will be coming out as a v minus u, ठीक है. Now it is going up with m plus इसका जो continuous change हो रहा है वो m minus dm, और इसकी velocity change हो रही है this. So this is how the momentum is conserved here. So do the integration and calculate whatever is been asked. So that will do on later on, but just to give you what is happening in the rocket, how the linear momentum has been conserved in rocket, that has just been explained to you here, right? So we are having the next topic as impulse. So I think we'll cover up impulse in the next lecture. So next lecture में हम लोग impulse, और because impulse पढ़ने के साथ it's better to understand the impulse with certain questions, so questions will be there. So it will another take almost 25 to 30 minutes of the time. So already it is 1 hour 20 minutes. So we'll cover up the impulse and impulse momentum relationship, impulse momentum equation, and the questions on the basis of impulse momentum equation in the next lecture. So next lecture में हम लोग further proceed करेंगे Newton's laws of motion में. We'll study the third law of motion, impulse momentum equation, and we are going to see some how we do the analysis of forces on a body. Okay, so we'll take a quick review कि आज हमने क्या देखा. So today we have started our lecture. We have seen up until the last lecture we have seen the effect on the body. The effect on the body is like whatever we are observing the first time we observe how the body is changing its position, how the body is been accelerating, deaccelerating, or how the body is been changing its motion, the velocity and direction. This is the first thing we observe in a body. That is what we have studied in the kinematics. Now this part is we are going to study now. It is a dynamics part. In this we are going to study how the push and pull is affecting the body, and how this body is been interacting with any other body, and how this body is interacting with the environment. So these all three things we are going to study. Then we have studied whether the natural state of a body is a rest or the motion. But for the 2000 years it's been said that natural state is the rest state. But later on the Galileo challenged that, and the Galileo has done this on the basis of the experiments like inclined plane experiment. And after doing this experiment, on that basis the Newton has unified those experimentations and unified them into the mathematical framework and gave the Newton's laws of motion. So Newton's laws of motion we have seen. Before that we have seen the forces, we have seen what is a force, and we have seen a force on the basis of nature. We have studied the four fundamental forces, and we have seen the classification of forces on the basis of interaction, like contact force and non-contact or the field force. Contact force हमने देखा, it is nothing but the manifestation of electromagnetic force. We have got a brief introduction of all this contact forces. Then we have seen the Newton's laws of motion. In that we have studied the effect of force on, that is the understanding of effect of force on the object. First law हमने देखा, which turned out to be a case के body अपने आप में कोई चेंज नहीं ला सकती. अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन में है मोशन पे रहेगी. एंड दैट डेवलप्स एन आइडिया ऑफ द इनर्शिया. इनर्शिया इज क्वांटिटेटिवली नथिंग बट अ मास. देन वी हैव स्टडीड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion, and the inertia of direction. And then we have seen the inertial frame of reference where the Newton's laws of motions are valid. So the inertial frame of reference is nothing but where the frame of reference is having the acceleration 0 and it is rest or moving with constant velocity. Then we have seen the concept of linear momentum. It is the quantity of motion on which our Newton's second law is depending. Okay, F external is nothing but your rate of change of momentum. So we have extended it with the variable mass and with the constant mass, but our cases we are going to study the constant mass in this chapter, in the coming chapters also, in this chapter also. Variable mass also we are going to cover up later on, but right now we are covering up with the constant mass. We are studying with the constant mass, so force external comes out to be F is into ma.
Then we have seen the principle of conservation of linear momentum. That is a fundamental principle. It is like trading between the momentums. So we have seen the cases: bomb explosion, bullet fire, and then we've seen the men jump from the boat, astronaut in the open space, and the rocket scenario. And the rocket also is a classic example of linear momentum conservation. So we have just got a hint of it, how the linear momentum has been conserved. But later on, the derivation and each and everything for the rocket propulsion scenario, we are going to do it in the later chapters, like वेरिएबल मास सिस्टम जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मे बी इन द सेंटर ऑफ मास लेक्चर्स, ठीक है. सो आज के लिए इतना, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ और फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ऑल राइट, थैंक यू. आई विल मीट यू अप इन द नेक्स्ट लेक्चर.